Let's discuss some important points regarding the sonnet Let Me Not to the Marriage of True Minds. The poem, as we know, is a sonnet, means William Shakespeare sonnet, that is Let Me Not to the Marriage of True Minds. So, I'll discuss some important points, some important questions that may be asked in your exams based on this poem. So, the first question that is going to be discussed is which Shakespearean sonnet begins, Let me not to the marriage of true minds. Actually, William Shakespeare never used any kind of title to his sonnets. He wrote his sonnets according to numbers, like number sonnet number 1, sonnet number 2. Like he wrote poem number 1, poem number 2, and later the first lines of his sonnets have become a kind of titles, or you may say the heading, you may say the title of the poem. So the first the poem which is prescribed in your syllabus is Let Me Not to the Marriage of True Minds. So this is sonnet number 116. So be sure it is sonnet number 116. Okay. The second question is which is the rhyme scheme of this here means Let Me Not to the Marriage of True Minds and of Shakespeare sonnet in जनरल. तो हमने बताया है कि शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, उसको आपको याद रखना है. क्लियर? तो आप इसमें से देखिए कौन सा सही होगा. आपने पढ़ा है ए बी सी डी ई एफ जी जी. सो द लास्ट मीन्स यू में से डी आंसर इज करेक्ट. सो ये केवल इस पोएम के लिए नहीं है. दिस इज applied to all Shakespearean sonnets, most of the sonnets written by Shakespeare and in the format of Shakespearean sonnet. Okay, so next question that is based on the text is Let me not to the marriage of true minds admit what. ये क्या एडमिट करता है, क्या नहीं करता है. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट, और ये एक तरह से सो दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो क्या आप इसके आगे एडमिट के बाद क्या आप डॉट डॉट में लगाना चाहेंगे. सो दैट इज इम्पेडिमेंट्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. लव इज नॉट which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. So what will be the correct? I think I read the whole line. So bends with the remover to remove. So this should be what? Remove. C is correct. The next is, this is also based on line that is from poem. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on what and is never shaken. So kya, what will be the answer? The correct answer is tempests. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. So the next question is, it is the star to every wandering. What will be the correct answer? वैसे सेलर पर रेड है तो ये सही नहीं है. It should be bark. D. It is the star to every wandering bark. If that is by mistake, और जो सेलर पर ऑप्शन हुआ वो तो that is by mistake. It is bark. The next question is, the next you may say line is, love alters not with his brief hours. अब ये भी ध्यान रखना है कि आपको his लगा हुआ है love के लिए. Love is masculine, suppose it is masculine gender. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of what. तो कहाँ तक, यदि आप
यदि आप पोएम पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा था। इट इज डूम, द करेक्ट आंसर इज एज ऑफ डूम होता है। क्लियर? एज ऑफ लाइफ है, एज ऑफ डॉन है, एज ऑफ डेथ है, तो ये सब सही नहीं है। लव इज नॉट हुज फूल, तो लव इज नॉट टाइम्स फूल, डेथ फूल है, मैंस फूल है, किंग्स फूल है, तो बट करेक्ट आंसर इज टाइम्स फूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमने आपको पीछे एक आंसर बताया था वो यही है। विलियम शेक्सपियर सनेट 116 शेयर्स द पोएट्स रिफ्लेक्शंस ऑन द नेचर ऑफ व्हाट? चार ऑप्शन है, यू हैव फोर ऑप्शन। सो आइडियल लव, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज, क्या है ये? एलेग्री है, इपिक है, सनेट है, मेटाफिजिकल पोएम है। इट इज अ सनेट एज वी नो। Shakespeare compares true love to a sun, a guiding star. So that is ever fixed mark. We have read it in the text. So this one is guiding star. B is correct option. Next is, what is the theme of Let Me Not to the Marriage of True Minds by William Shakespeare? So, see, even the strongest love is temporary, true love remains steady, age and time alter love, love changes as life changes. So, what will be the correct answer? So, its correct answer is true love remains steady. Steady means lagatar, that keeps on its existence. Next is, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिफर्स टू, तो क्या इसको क्या रेफर करता है? व्हाट डज मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिफर? तो यू सी, दिस इज लिटरल रेफरेंस टू पर्सनिफिकेशन ऑफ टू माइंड्स गेटिंग मैरिड, अ यूनियन दैट इज अनफेथफुल, अ यूनियन दैट इज फेथफुल। सो यदि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अ यूनियन इज अ फेथफुल, two faithful souls. Marriage of true minds here means, marriage here means union of two faithful souls. The when you read the poem, you have certain questions like what are the division of Shakespearean sonnets. So there are four parts, three quatrains are there, and one concluding couplet. So the last portion of William Shakespeare's or Shakespearean sonnet is a couplet. So I think you must have got some important points of the poem, so that may be helpful to you in your exam. We will discuss some other poems in next class. That's all for today.